हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आप सबसे बात करने के लिए अपने इस वीडियो के माध्यम से एक मिशन के अंतर्गत, जैसा कि हमारा मिशन है कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी कॉम्पिटिटर हैं पीजीटी और टीजीटी के लिए, उनके लिए कंक्रीट मैटर प्रोवाइड करना। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम वीडियो के थ्रू आप लोगों को कुछ ऐसे मैटर प्रोवाइड कराएं जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके और अपने प्रिपरेशन को प्रॉपर वे में चैनलाइज कर सके। In my previous lecture, I simply talked about the syllabus for PGT examinations. So I have decided now to concentrate upon the form of literature. Today I have picked up the definition of poetry given by some popular poets and critics. तो हम उन सब डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे और किस तरह वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं, आइडिया बेसिस, अपने व्यूज़ के बेसिस, और हम उन डिस्टिंक्शंस को पॉइंट आउट करते हुए किस तरह हम उसको अपने दिमाग में बैठा सकें, इस टेक्निक पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पोइट्री के डेफिनेशंस, जो एक नॉर्मली एक कंसेप्ट होता है लोगों के दिमाग में, आइए हम सबसे पहले उस पर फोकस करते हैं, उसको पॉइंट आउट करते हैं। हमारा एक जनरल डेफिनेशन जो पोइट्री का है, जो हम समझते हैं, उससे हम कुछ इस तरह पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और उसके एस्पेक्ट्स को पार्शियली या आंशिक रूप से सही हम अपने दिमाग में रख सकते हैं। जो फर्स्ट डेफिनेशन हमने पिकअप किया है, ये डेफिनेशन लॉन्ग मैन से लिया गया है, जो कि जनरल कंसेप्ट को दिखाता है पोएट्री के बारे में। So the first definition of poetry that I have picked up here is that poetry is a text in rhythmic form, often implying rhyme, and usually shorter and more concentrated in language and ideas than prose and drama. So let us focus upon some particular point that this definition contains within itself. पहला पॉइंट दिमाग में आता है वो ये है कि पोइट्री is a text in a rhythmic form. So the first aspect that we find in poetry is it can be considered to be rhythmic in form. इसमें राइम होना चाहिए और राइमिंग के अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि इट इज यूजुअली शॉर्टर and more concentrated in language and ideas rather than prose and drama. तो इस एस्पेक्ट को अगर हम ध्यान में देते हैं तो इससे ये पॉइंट क्लियर होता है कि पोइट्री इज कंसिडर्ड टू बी कंपैरेटिवली शॉर्टर देन अदर फॉर्म ऑफ लिटरेचर। इसे थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, और poetry focuses upon
language and idea rather than prose and drama। इसका मतलब यह है कि पोइट्री राइटिंग में सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, लैंग्वेज, आइडिया, प्रोज और ड्रामा फॉर्म के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। So a poet is supposed to be more conscious about the selection of the word, language, and the idea that the poet wants to communicate। तो इसलिए वो लैंग्वेज और आइडिया के प्रति एक पोएट ज्यादा कॉन्शियस होता है। जो नेक्स्ट and most popular definition that we come across is given by the great romantic poet William Wordsworth। बहुत ही पॉपुलर है और हम इस सारे, जैसा कि हमने कहा, इन सारे डेफिनेशंस को हम कंपैरेटिवली एनालिसिस करेंगे और वो डिफरेंस बेसिस ही हम उन्हें लोकेट करेंगे उस पोएट या क्रिटिक से जिसके द्वारा वो डेफिनेशंस दिए गए हैं। तो रोमांटिक पोएट एंड क्रिटिक विलियम वर्ड्सवर्थ, जिन्होंने पोएट्री की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार दिया है: पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। It takes its origin from emotion recollected in tranquility। रोमांटिक क्रिटिक्स का अपना एक अलग माइंडसेट होता था, उनकी एक अलग ओपिनियन होती थी, and they promulgated their own theory of the process of क्रिएशन। सो पहला जो पॉइंट फोकस आउट किया गया है वर्ड्सवर्थ के द्वारा, दैट पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। द वर्ड स्पॉन्टेनियस makes it clear that there must not be exerted effort on the part of the poet। मतलब कि पोएट्स को डेलिबरेटली पोएट्री क्रिएशन के लिए एफर्ट नहीं करना है, एंड इट मस्ट बी समथिंग नेचुरल। Feelings is created itself naturally in the heart of a poet. That's why he said that it is the spontaneous overflow of feelings। Now, the next point of Wordsworth's definition of poetry is that it takes its origin from emotion recollected in tranquility। So the next point is that emotion or the emotional aspects are predominant in the form of poetry। और इमोशंस एक डिफरेंट और स्पेशल टाइप का, कैसा इमोशन? रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। मीन्स the emotional thoughts or emotional experiences or the emotion by the poet must be recalled in the most tranquil atmosphere। मीन्स जब कभी भी वो शांति से बैठता है और उस समय उस इमोशंस को जब वो रिकॉल करता है, याद करता है, और उस इमोशंस को जब वो अपने वर्ड फॉर्म में रखता है, देन द पोएट्री इज बॉर्न।
Here I would like to share the opinion that Wordsworth pointed out in detail in his famous creation lyrical ballad, and he said that whenever you go to the nature, never have the pen or the piece of paper while being among nature. मतलब वहां पे भी आपको कॉन्शियस नहीं होना है इसके प्रति कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है. Means one is advised by the great William Wordsworth just to go and watch and observe the different scenario represented to him by nature herself. तो without pen and a piece of paper nature के बीच जाना है, उसे observe करना है. After coming back to one's home, one is advised to sit with a complete peace of the mind and then recall all those experiences, all those observations that one makes during his visit to nature. For poetry, एक स्पेशल डेफिनेशन जो कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा दिया गया अपने बुक लिरिकल बैलेट में. वर्ड्सवर्थ के कंटेम्पररी कोलरिज ने पोइट्री की डेफिनेशन देते हुए कहा है, पोइट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर. जैसा कि हमने कहा कि हम किस तरह से डिफरेंट वर्ड्स के द्वारा दिए गए डिफरेंट डेफिनेशंस को दिमाग में रखें, तो हम हमारे लिए आसान होगा अगर हम बेस्ट वर्ड्स और बेस्ट ऑर्डर को ध्यान में दें. We can easily correlate this particular definition to Coleridge. यहाँ पे Coleridge ने इमोशंस की नहीं बात की है. He simply talked about the selection of the best word and best order. Next definition वो भी romantic poet and critic पीवी शैली है. पीवी शैली ने भी अपने अंदाज में पोइट्री को डिफाइन किया है और पोइट्री को उन्होंने एक रिकॉर्ड कहा है. पोइट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड. कुछ हद तक अगर हम देखें तो बहुत सिमिलरिटी है शैली और वर्ड्सवर्थ के डेफिनेशन में. वर्ड्सवर्थ ने भी इमोशंस की बात किया है, फीलिंग्स की बात किया है, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने स्पॉन्टेनिटी पे फोकस किया है, नेचुरल ओवरफ्लो पे फोकस किया है. और शैली या कोलरिज के डेफिनेशंस को अगर हम ध्यान से देखते तो जब वो बेस्ट वर्ड्स और शैली बेस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट की बात करते हैं तो ये क्लियर होता है बोथ ऑफ देम, आई मीन शैली, पीवी शैली एंड कोलरिज आर वेरी मच सेलेक्टिव. जो कि ये अलग करता है वर्ड्सवर्थ से, इसमें वो स्पॉन्टेनिटी नहीं नजर आती है जो हम वर्ड्सवर्थ के डेफिनेशन में पाते हैं. शैली का एक और एडिशनल वर्ड है
happiest moment of the happiest and the best mind. It just points out the personality of the poet also. It just points out the state of poet's mind. And Shelley, B.B. Shelley, is selective. It reflects that he only wants to mention, he only wants to refer to the happiest moment of life. And that should be pointed out by the happiest and the best mind. Best mind reflects that the poet is supposed to be unique in itself. पोएट्स को अपने आप में डिस्टिंक्ट माना गया है, जो कि रोमांटिक क्रिटिसिज्म में हम पाते हैं कि पोएट इज सपोज्ड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन मैन, और उसकी यही डिस्टिंक्शंस दैट प्लेसेस द पोएट upon the uppermost seat. जॉन कीट्स भी अपने इसमें कहते हैं कि पोएट्स भी वही होता है जो एक्सपीरियंस करता है उन चीजों को जो कॉमन लोग नहीं करते हैं. The poet has speciality in his personality. ये अथॉरिटेटिव पोजीशन पोएट्स का हम नहीं पाते हैं जैसे ये मॉडर्न क्रिटिसिज्म की ओर बढ़ते हैं. मॉडर्न क्रिटिसिज्म, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर एंड पोएट्री is entirely different from those of the definitions given by the earlier poets and critics. The most popular among the modern critics is, of course, it is T.S. Eliot. और यहाँ पे हम T.S. Eliot की उस डेफिनेशंस को पॉइंट आउट करेंगे जो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही डिस्कस की गई है लोगों के द्वारा अपने लेक्चर्स में. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टिंक्शन, वेरी अपीलिंग distinctions from those of the definitions given by the early critics. Eliot की definition poetry की है. Poetry is not the turning loose of emotion, it is an escape from emotion. It is not an expression of personality, it is an escape from personality. तो उस इमोशन को जिसे रोमांटिक क्रिटिक्स ने अपने डेफिनेशन में स्पेशल स्थान दिया है, उस इमोशन को निगेट किया है T.S. Eliot. He rejected almost. He almost rejected the definition of poetry given by the romantic poet. He says it is not a turning loose of emotion. Means poems emotional हो ऐसा बिल्कुल नहीं है पोएट्री के T.S. Eliot के अनुसार. He pointed out just reverse of what the romantic critic said about poetry. According to Eliot, it is an escape from emotion. इमोशंस का एक्सप्रेशन नहीं है बल्कि उससे escape है, उसको अवॉइड किया गया है इमोशंस को पोएट्री राइटिंग में.
नेक्स्ट पॉइंट जो टी.एस. एलियट का है, अब पाते हैं कि रोमांटिक पोएम्स ज्यादातर सब्जेक्टिव होती हैं, कन्फेशनल होती हैं, and those poems are only the expression of poet's personal opinion about the objects. That turns out to be typical subjective poetry, जो कि रोमांटिक पोएट्स जब लिखते हैं। टी.एस. एलियट ने इसको रिफ्यूज किया, रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा है इट इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, इट इज एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि पोएट्री, इफ इट इज सब्जेक्टिव, कैन नेवर बी measured as a true form of poetry so far as modern critics are concerned. एलियट ने वर्ड्स के माइंड को एक कैटलिस्ट माना है, जहां पे इमोशंस, आइडियाज शब्द होते हैं, क्रिएशन डेवलप होता है। So according to T.S. Eliot, the poet's mind is supposed to be like a catalyst. So in this video I discussed the main point about the poetry writing and its definition. The next I will definitely discuss some more crucial points that may help everybody in the preparation for PGT and TGT. Till then, goodbye.